Okay, beta, now please pay your attention. We already discussed a lot about macroeconomics, economics and macroeconomics, different concepts of macroeconomics in our previous sessions. We have covered most of the things related to individual quantities in macroeconomics. Now we are switching our macroeconomics concepts toward the macroeconomics, and now we want to see that if there is an aggregate demand, aggregate supply, if we are talking about the inflation, GDP, economic growth, monetary policy, fiscal policy, then we have to cover all these things in the concepts of macroeconomics. If we are talking about the Great Depression, it started 1929 and lasted to 1939. Then macroeconomics evolves in this duration in 1930. As you people already know that the macroeconomic concept is brought by John Maynard Keynes. John Maynard Keynes in 1930 with his revolutionary theory of inflation, unemployment and prices. What we can say that how governments are able to control the prices, inflation and unemployment. He brought this concept and laid foundation of macroeconomics in 1930s. What was the Great Depression? The Great Depression is that most of the countries felt inflation Why inflation arises here? You all are aware of about Second World War. Here inflation and industrial production suppressed, and there was less technological inventions and innovations. Because of that, most of the people faced challenges of affordability, not only in a single country but in most of the countries of the universe, especially those countries which are based upon industries. Most of the industrial countries suffered in Great Depression. Now, the evolution of macroeconomics, or the birth of macroeconomics, started in 1930 with this theory of the John Maynard Keynes, in which he suggested that establishments or the government should control the employment, inflation, or government should involve in decision making. So, when we are talking about the macroeconomics, then we say that macroeconomics is the study of the behavior of the economy as a whole. What is macroeconomics? Macroeconomics is simply the study of the behavior of economy as a whole.
What it examines? We can say it examines the forces that affect firms consumers, and workers. That affect firms, consumers, and workers in the aggregate. When we are talking about the aggregate, simply it reflects the macroeconomy. When we are talking about the individuals, quantities, then it is related with the microeconomics. In contrast, what was macroeconomics we have already discussed. In contrast, I am writing here Macroeconomics studies individual prices, quantities, and markets. Individual prices, quantities, and markets. Here we are clear about the difference between macroeconomics and microeconomics. When we are talking about the macroeconomics, then we are talking about the aggregate demand, aggregate supply, and influences the forces which are affecting on the aggregate demand and supply. Because of the aggregate demand and supply, we are having different kind of influence in economy. Let's suppose I am talking about if there is high aggregate demand of flour in Pakistan or wheat in Pakistan. What is its effects? Its effect is causing inflation in food prices. आप लोग जानते हैं कि अभी जो प्राइस है आटे की 1 किलो की वो 115 रुपीज़ है. ये कैसे अचानक से विद इन डेज चेंज हो गई? क्यों? क्योंकि बरसातों की वजह से और ये फ्लड जो आई हुई है रिसेंटली उसकी वजह से जहाँ जहाँ पे इसके वीट के ज़खायर थे वो गीले हो गए, गीले पड़ गए और नुकसान हो गया. तो उसकी वजह से लोगों की अभी फसलें भी नहीं उगलेंगी पानी ज़्यादा होने की वजह से. उसकी वजह से क्या हो गई? डिमांड ऑटोमेटिकली इधर बढ़ गई. अभी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को किसी ना किसी कंट्री से उसकी सप्लाई मंगानी चाहिए. लेट्स सपोज रशिया से इंपोर्ट कर दे, इंडिया से, कहीं भी किसी कंट्री से. पाकिस्तान अगर वीट इंपोर्ट कर देता है तो ये कुछ ना कुछ कंट्रोल में आ जाएगा. मगर यू पीपल know very well the devaluation of your currency. Now when you are purchasing the dollar, it is about 237 rupees a single dollar. So if we are importing things, either they may be raw material or finished goods, then certainly we are having huge balance of payment deficit. Balance of payment deficit सिंपली ये है कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में हमें उतने ही पैसे पे करने हैं क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम है. हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं. थोड़ी सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो इतना उधर से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं. पहले ही हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, मेडिसन और ये चीज़ें. अभी एक और बर्डन हो गया कि हम जो है ना वीट और ये दूसरी चीज़ें रॉ मटेरियल भी हम वहाँ से सप्लाई मंगाएंगे
कि हम जो है ना लोगों की डिमांड को जो है ना कैटर कर सकें। तो अभी टोटल इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, सर्टेनली इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो कंपनीज पहले एम्प्लॉयज़ को कुछ पे करती थी, जिस कंपनीज के पास 5 या 6 एम्प्लॉयज़ है वो रिड्यूस करके 3 या 4 पे आएगी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी ज़्यादा एम्प्लॉयज़। और सर्टेनली इसका इफेक्ट ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स पहले ही कम है, फिर ज़्यादा कम हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए ना। इंटरेस्ट रेट आपका इतना ज़्यादा है, अभी जो 13.5 मेरे ख्याल से जो डिस्काउंट रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी जो सेट किया हुआ है, तो काइबोर आपका इतना ज़्यादा है, अभी कोई भी इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, किसी बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर इंटरलिंक्ड। If we are talking about these and we are going to study all these things as a whole, then certainly we are talking about the macroeconomics.